Assalamualaikum guys, and welcome to another DHS vlogs. Hope you guys are all doing fine. It's been a while and I missed you all. I was very busy lately, so I couldn't make a video, but there has been a significant uh, uh, step taken by the Japanese scientists, and there have been a certain get together which happened as named RINK Festival 2025, which I got to know about, and I got certain details I want to share with you. In this video, I will tell you the latest breaking news which the scientists have planned about the regrowth medicine. Keep watching the vlog till the end, and please, every time whenever I open my YouTube studio, I get to know that all the viewers which are watching this video are non-subscribed. So please subscribe the channel, show your support and love to our channel also, so that we can grow and make more videos for you. And if you like the content, please share it to everybody, because all this content comes with a great amount of research. Let's move to the video. Okay, guys, what is this RINK festival? This is a festival in which all the students, researchers, people writing theses, people doing research work on stem cells and regenerative medicine, in any kind of medicine related to cancerous or related to cancer healing medicines. This is a festival for all scientists and doctors, which is held in Japan. It happens every year, and all the people, all the doctors and scientists in Japan, they get together and they share their results on their research. So in this RINK festival, they have different scientists come together, and they are telling about different things, and it happened at Haneda Airport Terminal 3. And I get to get some information from this festival related to the people which spoke about different things. About this festival, I will tell you many things, many certain things which I think which are very important in telling you about research medicine. But the main thing about this conference which happened was that they basically invited certain guests from US, because they wanted the tooth regeneration medicine to be available in US, and they planned that the Japanese scientists have planned that they will start by hitting the US market first. As you heard me, they will start by hitting the US market first. So as you can see in this photo, which will be coming on your screen, displaying on your screen soon, they are saying that targeting the United States market continues to be an important objective for cell and gene therapy products, given the large addressable population, available industry infrastructure. This session will provide an overview of CGT preclinical development strategies that align with the current industry best practices and considers the evolving expectations of US FDA related issues. So they want people to come and see their researches, and they want what is the scope of tooth regeneration medicine in the US market, and how we get approval from FDA from US. Additional topics such as optimal timing of FDA engagement and opportunities to accelerate non-clinical development also were discussed. So this is a main thing, because they are moving forward with the trials, and they want their preclinical trials to be explained to people from US, from doctors from US, from their board of directors of FDA. They want how they can help this medicine which will be available in US. What are the laws, what are the basically what are the main causes which they can make easy for the government, so that they can have to get their medicine to be available in Japan. So it helped. So this all this seminar was very nice. Last year, Ministry of Education and Ministry of Health also were present in this year also. And the plan outlines the future direction of biopolicy. One key point is strengthening CDMOs, contract manufacturing organization. They want private organizations to also jump in to the regeneration process and help people with this new era of regenerative medicine. For my followers which don't understand English,
गाइस ये उन्होंने बेसिकली एक फेस्टिवल बनाया है ऑल डॉक्टर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए, जो आए आके अपनी रिसर्च पे बात करें, लोगों को बताएं इस रिसर्च में क्या होता है। उसमें उन्होंने इस दफ़ा अमेरिका से गेस्ट बुलाए हैं, एफडीए के लोग बुलाए हैं, फेडरल ड्रग्स जो उनकी रेगुलेटरी बॉडी है अमेरिका की, उनको बुलाया और उनसे बात की है कि किस तरह हम ये जो अपनी रीजनरेटिव दवाई है, मेडिसिन है, इसको हम यूएस मार्केट को कैसे हिट करें, किस टाइम पे हम अप्लाई करें एफडीए के अंदर, कैसे हमें परमिशन मिल सकती है, क्या लॉज हैं रीजनरेटिव मेडिसिन की, ताकि हम ये दवाई यूएस में लॉन्च करना चाहते हैं। ये बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग बात है, मतलब कि उन्होंने फर्स्ट टारगेट, जापानीज साइंटिस्ट ने फर्स्ट टारगेट किया ही यूएस मार्केट को है, ताकि यूएस मार्केट में कैसे अवेलेबल होगी। तो ये बहुत अच्छा था। इसमें कुछ लोग आए हुए थे, अमेरिकन डॉक्टर्स भी थे, कुछ साइंटिस्ट भी थे, कुछ प्राइवेट कंपनीज भी थी जो टूथ रीजनरेशन के बारे में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। इसमें और बहुत कुछ था, इसमें जीन थेरेपी भी थी, इसमें कैंसर रिलेटेड ड्रग्स भी थी, लेकिन मैं सिर्फ टूथ रीजनरेशन की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट शो किए और उन्होंने मेक श्योर किया। इस फेस्टिवल के एंड पे एक अमेरिकन स्पोक्समैन थे, उन्होंने बोला था कि मैं कोशिश करूँगा एफडीए को इस रीजनरेटिव मेडिसिन पे एक गाइड करने का, ताकि वो जापान में आके ख़ुद भी देखें कि ये मेडिसिन कितनी अच्छी है और क्या ये लोगों को अवेलेबल हो सकती है, इसके लिए क्या लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो जापानीज़ को अप्रूव करवाने हैं अमेरिका में। तो वेरी गुड न्यूज़ है गाइज, अगर यूएस में अवेलेबल हुई तो फिर सारी दुनिया में अवेलेबल होगी। जो हमारे सबके कंसर्न्स होते हैं कि सर ये ट्रायल्स कैसे जा रहे हैं, क्या ये एक फॉरवर्ड स्टेप है ट्रायल्स का, मतलब वी आर गोइंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और सारे लिंक्स और सारी फोटोज़ मैं शेयर कर चुका हूँ, वीडियो के अंदर आपने देखी होगी। और इसमें फिर वही बात है, मैं थोड़ा सा इस बात पे बात करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि फेक है, आप फेक वीडियो बना रहे हैं। ऑल द न्यूज़ इज प्रेजेंट ऑन देयर वेबसाइट, ऑन देयर मीडिया सेंटर। आप जाके खुद देख लें, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं लिंक्स और फोटोज़ देता हूँ, आप खुद देखें वो क्या बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो जो बात करेंगे मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। मैं खुद तो घर बैठ के कोई बात खुद से तो बना नहीं रहा, तो मैं ऑब्वियसली आई ऑलवेज शेयर द प्रेस रिलीज विच दे हैव गिवन ऑन देयर वेबसाइट। सो आई थिंक थोड़ा सा दिमाग खोलें और डोंट बी टू मच स्केप्टिकल, स्केप्टिबल क्या लगता है, स्केप्टिबल, हाँ, आई एम टेलिंग इट रॉन्ग, तो करेक्ट मी। तो खैर थोड़ा सा try to open your brains and try to get in the information which I'm telling you. All this information is only for your health, our health, and for the health of our people related to problems which people have about their teeth. So keep watching DHS vlogs and pray for us, or please like and subscribe and share the channel. Let the channel grow. It's a request from me and from my team also. So keep watching DHS vlogs. It's time to go. Allah.